ओके तो हमारे पास चैप्टर 2 है बिजनेस स्ट्रक्चर। तो इसके अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, देखेंगे P1 से सर्च करते हैं, देखते हैं क्या कंटेंट मिलता है हमें। कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या क्या है वहां पर। हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, हमारे पास फ्रेंचाइज है। तो लेट्स सर्च फ्रेंचाइज क्या आता है हमारे पास। सर्च किया हमने, शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे बिजनेस स्ट्रक्चर के ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, लॉन्ग के अंदर। तो पहला सवाल है हमारे पास 2 मार्क के लिए, डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज। सही है, 2 मार्क के लिए सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म फ्रेंचाइज। तो 2 मार्क के सवाल के अंदर हमें क्या याद रखना है और क्या कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो जाए। तो लिखते हैं इसका आंसर, फ्रेंचाइज इज द यूज ऑफ बिजनेस नेम। Franchise is the use of business name, logo, and trading method. Franchise is the use of business name, logo, and trading method of an existing successful business. ठीक है, फ्रेंचाइज क्या होता है, जिसके अंदर हम एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल बिजनेस का नेम, लोगो और ट्रेडिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। और एक फ्रेंचाइज बिजनेस सोल ट्रेडर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है। फ्रेंचाइज इन इटसेल्फ इज नॉट अ लीगल स्ट्रक्चर। इसी का पार्ट 2 है हमारे पास फॉर 3 मार्क्स। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंचाइज। तो सिर्फ हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाना कि अगर एक एंटरप्रेन्योर क्या बनता है, फ्रेंचाइज परचेज करता है तो उसको बेनिफिट्स क्या होंगे। तो लिखते हैं पहला बेनिफिट, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 बेनिफिट्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंचाइज। एक एंटरप्रेन्योर अगर एक फ्रेंचाइज परचेज कर लेता है तो उसको बेनिफिट्स क्या होते हैं। 3 मार्क का सवाल है, तो लिखते हैं इसका आंसर, the benefits to the entrepreneur would be, the benefits to the entrepreneur would be that the chances of failure, that the chances of failure would be minimal, that the chances of failure would be minimal as the business is already well established, and has a customer base, ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा लिख देते हैं, the other benefit would be that the entrepreneur will get guidance, knowledge and training from the franchise
from the franchise which may help in running the business, which may help in running the business effectively, which may help in running the business effectively. सही. तो यहाँ पर हमारे दो बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फ्रेंचाइज खत्म होते हैं फॉर 3 मार्क्स. सही. लिखने नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे और करना है कि एक्चुअली बेनिफिट क्या है. अगला सवाल है हमारे पास फॉर 2 मार्क्स अगेन. डिफाइन द टर्म सोल ट्रेडर. क्या है हमारे पास? डिफाइन द टर्म सोल ट्रेडर. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं. इट इज अ बिजनेस, it is a business, it is a business owned and controlled by a single individual, single की जगह सोल भी लिख सकते हो, by a single individual who has complete authority, full stop. In case of profits, the sole trader enjoys all the profit, or in case of losses, bears all the losses. अच्छा, मैंने आपको अभी इस तरीके से लिखवाया ना 2 पॉइंट्स, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे. इट इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल which does not have separate legal identity or continuity and has unlimited liability. तो इस डेफिनेशन पे भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं. बस कोशिश ये करनी कि एटलीस्ट 2 रेलेवेंट पॉइंट्स आप डेफिनेशन में डाल रहे हो. अगला क्या है हमारे पास? अब स्पेसिफिकली बोल रहा है स्टेट 3 प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर. अब इस तरह के सवाल आते नहीं, स्पेसिफिकली बोल रहा है स्टेट 3 प्रॉब्लम्स. तो आपको सिर्फ सिंपल ड्रॉबैक्स लिखने हैं. 3 क्या लिखने हैं? 3 ड्रॉबैक्स लिखने हैं. तो लिख लो अनलिमिटेड लायबिलिटी, 3 प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर. अगर आप सोल ट्रेडर की तरह ऑपरेट करते हो 3 मसले क्या होंगे, यानी 3 ड्रॉबैक्स, 3 डिसएडवांटेजेस. तो पहला क्या है आपका? अनलिमिटेड लायबिलिटी. पहला क्या है आपका? अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि सिर्फ स्टेट बोला है तो बस हम लिख रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी. नंबर 2, does not have continuity, और उसके नीचे ही लिख दो, आप पहले लिखो does not have continuity और उसके नीचे लिख दो does not have separate legal identity. तो यही तीनों चीज आपके ड्रॉबैक्स में कंप्लीट हो जाती हैं. अच्छा, मैंने आपको कल जिक्र किया था पढ़ाते हुए कि आपके जो कोऑपरेटिव्स हैं कि इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है. तो हम जरा उसको देख लेते हैं. एक सेकेंड, जरा सर्च करते हैं इसका सवाल. ओके, इसका सवाल आया भी है, लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है. मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में मिल जाए हमें. एक मिनट. अच्छा, लिख लो अपने पास ऐसी डेफिनेशन मेंशन करो. डिफाइन द टर्म कोऑपरेटिव. डिफाइन द टर्म कोऑपरेटिव. हाँ, कोऑपरेटिव. एक सेकंड, मैं इसकी स्पेलिंग भी आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या है. द स्पेलिंग इज, वेयर इज इट.
Yes. COOPERATIVS, cooperatives. ठीक है, तो डिफाइन द टर्म cooperatives. तो अब इसमें गेम क्या है, तो लिखते हैं it is a business in which individuals or groups join their resources together, and set up operations full stop. They have equal ownership and rights while the profit and losses are distributed equally. While the profit and losses are distributed equally. ठीक है, ये आपका कोऑपरेटिव। अगला आंसर लिखो 2 मार्क के लिए। नहीं, आई एम राइटिंग शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है। डिफाइन जॉइंट वेंचर। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफाइन जॉइंट वेंचर। सो 2 मार्क के लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ, it is when 2 or more businesses join their resources together for a specific project, but they have their own legal identities. ठीक है, 2 पॉइंट्स मेंशन हो गए, तो यहां पर हमारी 2 मार्क की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसी सेम क्वेश्चन के लिए अगर हम पार्ट बी देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर टू द बिजनेसेस इन्वॉल्व। यानी 2 एडवांटेजेस बताने हैं जॉइंट वेंचर के टू द बिजनेसेस इन्वॉल्व। लिखते हैं द एडवांटेजेस आर that the risk, briefly explain 2 advantages of joint ventures to the businesses involved. So आगे लिखते हैं कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डेप्थ में चले जाती है बात कि हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स में स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, और इस तरह का सवाल मैंने देखा नहीं, तो बिजनेसेस ज्यादा रेलेवेंट है। तो फर्स्ट लिखते हैं द एडवांटेजेस वुड बी that the risk will be spread
will be spread amongst the business, will be spread amongst the businesses लिख दो, will be spread amongst the businesses, so the losses will not need to be, so the losses will not need to be faced by a single individual, full stop, ये कॉमा डाल दो, while the other advantage would be that businesses will bring in different specialities, and access to more resources, making the business more efficient, तो यहां पर हमारे 3 मार्क कंप्लीट होते हैं। एक और थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर यूजुअली ना लॉन्ग के अंदर है, शॉर्ट के अंदर इतना ज्यादा नहीं है। काफी हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत कम है बिजनेस स्ट्रक्चर पे। चलो ये आखिरी 2 करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 2 मार्क का सवाल है, डिफाइन द टर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। डिफाइन द टर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर 2 मार्क्स। Define the term private limited company for 2 marks. लिखते हैं इसका आंसर। It is an incorporated business. It is an incorporated business which has separate legal identity, continuity and limited liability, while the business is not listed on the stock exchange, while the business is not listed on the stock exchange। अगर इसी जगह पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन होती तो हम बस क्या चेंज कर देते,
that the business is listed on the stock exchange. बाकी पूरी डेफिनेशन यही होती है। अगला 3 मार्क का सवाल है हमारे पास, पार्ट बी। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 possible disadvantages to a sole trader। क्या पूछ रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन 2 possible disadvantages to the sole trader of changing to a private limited company। अगर एक सोल ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर चेंज हो जाता है तो उसके 2 पॉसिबल डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ब्रीफली एक्सप्लेन 2 पॉसिबल डिसएडवांटेजेस टू अ सोल ट्रेडर ऑफ चेंजिंग टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ऑफ चेंजिंग टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लिखते हैं, तीन मार्क्स का। अभी हम सिर्फ 2 मार्क और 3 मार्क पे काम कर रहे हैं। ओके, लिखते हैं, द ड्रॉबैक्स वुड बी, द ड्रॉबैक्स वुड बी that the accounts of the company, that the accounts of the company will be made public, that the accounts of the company will be made public, will be made public, and the business may not enjoy the secrecy, and the business may not enjoy the secrecy. The other drawback would be, it will be expensive, and may require a lot of legal formalities, and may require a lot of legal formalities to change the business from sole trader to a private limited company, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 ड्रॉबैक्स आ गए कि एक बिजनेस अगर सोल ट्रेडर से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है, बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये 2 ड्रॉबैक्स आ गए। तो आज हमने क्या देख लिए? शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए बिजनेस स्ट्रक्चर के। तो करते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप।